Two liquids A and B are at 32 degrees centigrade, isn't it? And 24 degrees centigrade. तो मेरे पास एक liquid है बेटा. This one is your liquid A, and this one is your liquid B, isn't it? R at 32, ये हो गया 32 डिग्री सेंटीग्रेड के पास और ये हो गया 24 डिग्री सेंटीग्रेड के पास. तो दोनों को जब मिक्स कर दिया गया, मिक्स्ड इन इक्वल मासेस, यानी इसका मास m और इसका मास m, फाउंड टू बी हाउ मच, यानी इन दोनों का टेम्परेचर आ गया 28 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दिस विल लूज एंड दिस विल गेन, A will lose and B will gain. So specific heats are in the ratio of your how much, yani I can use the formula heat lost must be equal to heat gain. पता है ना बेटा? So दोनों का masses same है. So this is your m into specific heat of the first liquid is मान के चलो F1. ये हो गया 32, higher temperature, common temperature आया 28. Next one liquid का हो गया m, specific heat हो गया S2 into ये हो गया 28 से आया ये 24. 24 से 28 पे है ना बेटा. A mass will get cancelled right now for B. तो कितना आ रहा है देखिए बेटा, 32 minus 28 कितना आ रहा है? This is S1 into your 4, that is equals to this is S2 into your 4. ये वाला चले गया, तो S1 is equals to S2. अच्छा कल लिक्विड से है क्या? आई डोंट नो. ओके चलिए तो लिक्विड से कर लेते हैं तो जल्दी से. मैं कैलोरीमेट्री है समझ रहा हूँ. चलिए thermal expansion of matter. बोला ना बेटा मॉडर्न फिजिक्स हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स थोड़े चैप्टर्स तो भी एटलीस्ट अपन को आप लोग खत्म कर लेना होगा. अगर ऐसे ही करते रहोगे तो कुछ भी नहीं होता. कितना बैकलॉग बोल के करते रहोगे बोलो? आप लोग सिर्फ बॉटनी ज़ूलॉजी लेके ही पढ़ते रहते. अभी बैकलॉग मतलब एटलीस्ट ट्राई टू डू सम चैप्टर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स जो होते हैं ना, उसको तो भी एटलीस्ट आप लोग खत्म करने की कोशिश करिए. दैट विल हेल्प यू आउट फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी उसमें. है कि नहीं? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वगैरह के क्वेश्चन थोड़े तो भी क्वेश्चन ऐसे वाले कर लेना जहां पर आप लोग थोड़ा बहुत वर्कआउट कर सकते हो, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है. मिनिमम बेसिक वाले क्वेश्चंस तो भी खत्म कर लेना बेटा. लास्ट मोमेंट में आने के बाद यही रहता हाल बच्चों का. थोड़े चैप्टर्स तो भी निकल के खत्म करो ना बेटा. चलिए थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर में बेटा पहले अपन बात करते हैं थर्मोमीटर की. याद है आप लोग को थर्मोमीटर मैंने पढ़ाया था. Thermometer is a device which is used to measure what beta? Degree of your hotness or coldness of your body. इसका फॉर्मूला होता था, जनरल फॉर्मूला याद है, T is equals to sum x at T degree centigrade minus x at your 0 degree centigrade divided by x at your 100 degree centigrade minus x at your 0 degree centigrade into your 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए.
X कैन बी एनीथिंग बेटा, वो लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, और प्लैटिनम रेसिस्टेंस हो सकता है. X can be anything. It can be the length of mercury column, resistance of a metal, or it may be a pressure, it may be a volume, anything basically. तो उस पे अल्लाह थोड़ा वर्कआउट कर लीजिए. उसके बाद स्केल्स भी करवाया था. कन्वर्शन फैक्टर्स बहुत फेमस है. C/5 is equals to your F minus of 32 divided by your 9. C is in your Celsius, F is in your Fahrenheit scale, and K is in your Kelvin. K minus 273.15 divided by your 100. यानी इसका भी हो जाएगा 5. यानी one division of your Celsius scale will be equal to 1.8 divisions of your Fahrenheit scale, and that will be equal to again 1 division of your Kelvin scale. ठीक है. चलो, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में अगर हम लोग थोड़े फॉर्मुलेस देख लें. एक्सपेंशन ऑफ योर सॉलिड्स क्या फॉर्मुला है बेटा? फर्स्ट वन इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के लिए अल्फा इज इक्वल्स टू योर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू योर टेंपरेचर डिफरेंस. नेक्स्ट वन इज बीटा. Beta is equals to change in your area divided by original area into your temperature difference. Then third one is right now for me gamma. Gamma is equals to your change in volume divided by original volume into change in temperature difference. इन लोगों का रिलेशन याद है अपने को. Beta is equals to 2 times of alpha and gamma is equals to 3 times of alpha. यानी 1:2:3 का रिलेशन आ जाएगा इन सभी को बेसिकली. याद है ना सभी को? बेसिक फॉर्मूले से बेटा इतने तो भी याद आना चाहिए बेसिकली. चलिए, नेक्स्ट वन इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल. डेंसिटी का फॉर्मूला याद है. डेंसिटी एट योर T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू डेंसिटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा इनटू योर T. 1 plus gamma into T. So density at your T degree centigrade is equals to density at your 0 degree centigrade divided by 1 plus gamma into delta T. अगर ρ1 and ρ2 में दिया तो कैसे लिखते हैं बेटा? Gamma value will be equal to your density ρ1 minus of your ρ2 divided by your, this will be equal to ρ2 into your T2 minus of your T1. तो ये हो गया value of your gamma. Gamma is equals to your ρ1 minus ρ2 divided by your ρ2 into T2 minus of your T1. ठीक है ना? इतने फॉर्मुलेस अपने को सॉलिड्स में तो बेसिक याद रखना है बेसिकली. और देखो बेटा इसके अंदर थोड़े रिलेशंस भी होते हैं बेसिकली. जैसा मान के चलो छोटे वाले फॉर्मुलेस लिख देता हूँ. ए वाला एक रॉड है मेरे पास. दिस इज अटैच्ड टू योर वन मोर रॉड जिसका लेंथ है मान के चलो L1, जिसका लेंथ है L2. दिस इज मेड अप ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 and this one is right now for me α2. Two rods are been connected in series. Then equivalent अगर पूछा तो कैसे लिखोगे बेटा? Alpha will be equal to your L1 alpha1 plus of your L2 alpha2 divided by L1 plus L2. Very famous formula, regularly आता है. Two rods अगर ऐड करें in series combination तो coefficient of effective of your alpha value कैसे निकालो? ठीक है ना? Is that clear? And one more formula is very important in this one. Radius of curvature of bimetallic surface. यानी bimetallic के लिए अगर होता है which is a combination of two different metals, R is equals to your thickness T divided by your alpha2 minus alpha, यानी जिसका ज्यादा कोएफिशिएंट उसका माइनस उस छोटे वाला into your temperature difference. So that will give me the value of your radius of your bimetallic strip. याद है? चलो, नेक्स्ट वन इज छोटा हम लोग बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. एक्सपेंशन ऑफ योर लिक्विड्स. इसमें फर्स्ट फॉर्मूला आता है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ योर रियल एक्सपेंशन यानी गामा ऑफ योर रियल will be equal to gamma of your apparent plus gamma of your glass. यानी apparent कैसे निकालते हैं बेटा? Coefficient of apparent expansion will be equal to Vt minus V0 divided by V0 into your temperature. Change in volume by original volume into your temperature. और in terms of mass अगर लिख रहे हैं तो gamma apparent will be equal to
Original mass m naught minus of capital M divided by your m into your T. Clear बेटा? गैसेस के अंदर फॉर्मूला याद है आप लोगों को? Expansion of your gases. Expansion of your gases. एक बेसिक फॉर्मूला होता है गामा ऑफ योर वॉल्यूम कोफिशिएंट, that is 1/273 per degree centigrade. Gamma at your constant pressure will be equal to, this is also 1/273 per degree. Alpha beta लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू will be come out for me the same. एक छोटा सा एप्लीकेशन उसके अंदर लिख लेना है. उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक बेसिक रिलेशन है बेटा. Change in moment of inertia delta I divided by I will be equal to 2 alpha into delta T for a rods. अगर ओमेगा में लिख रहे हैं तो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर डेल्टा आई डिवाइडेड बाय योर आई. That will be equal to minus of 2 into alpha into your delta T. Moment of your inertia is 2 times of alpha into delta T. और angular velocity अगर ले रहे हैं तो minus of your 2 alpha into your delta T. ठीक है? क्लियर है बेटा? चलो. और एक फेमस फॉर्मूला है इसमें लॉस और गेन का प्रॉब्लम. The change in time period is given by the formula delta T will be equal to your alpha into T divided by 2 into your T naught. Loss or gain of your loss time will be calculated by the formula 1/2 into alpha into T into your T naught. T naught is nothing but of your time period. ठीक है? थर्मल कंडक्टिविटी भी है क्या एग्जाम के लिए बेटा? ये क्वेश्चन देख लीजिए बेटा. The second pendulum, a second pendulum clock has a steel wire. Has a steel wire. The clock shows correct time at 25 degrees centigrade. Question is, how much time does the clock lose or gain? Lose or gain in 1 week? In your 1 week, when the temperature is increased by and the temperature is increased by or increased to 35 degrees centigrade. Alpha of steel is equals to, given in the problem, 1.2 into 10 to the power of -5 per degree centigrade. कोई कर सकता है क्या? देख लीजिए जल्दी से. लॉस और गेन का भी फॉर्मूला बताया मैंने. The second pendulum clock has of your steel wire. The clock shows the correct time at 25 degrees centigrade. How much time does the clock lose or gain in 1 week when the temperature is increased to 35 degrees centigrade? Alpha of steel दे रखा है. Delta T divided by T will be equal to half into alpha into temperature difference, that is delta theta, isn't it? So time will be equal to how much beta? Time will be equal to how much? T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? T value will be equal to your
week matlab 7 days, 7 into 24 into 60 into 60, isn't it? Yani that will be equal to 7 into, this is 86,400. And is 7, this will be 604800. यानी मैं लिख सकता हूँ delta t will be equal to your half into your alpha value is 1.2 into 10 to the power of minus 5 into temperature difference कितना है 35 minus 25 into your tt is 604800. ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट द आंसर फॉर दैट. कर लोगे ना, इधर लिया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. On heating a uniform metallic cylinder, a uniform metallic cylinder length increases by 3%. The area of cross section, the area of your cross section of its base will increase by how much? चलिए बताइए कोई. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू योर आर स्क्वायर. यानी दिस वन इज डी ए डिवाइडेड बाई योर ए विल बी इक्वल टू योर, अगर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इट इज 2 पाई आर इंटू योर डी आर, isn't it, divided by your how much वर्मी, area will be equal to your divided by your a. यानी this will be equal to how much वर्मी और by r square का हम लोग लिख रहे हैं right now, r square का relation r into your dr divided by your r, यानी original area. So this will become for me your 2 pi into your r into your dr divided by actual area will be equal to pi into your r square. A pi, ar, a square will get cancelled. यानी dA divided by your A will be equal to 2 times of your dr divided by r. वैसे तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ बता दिया. सो ए बाई ए का डेल्टा ए बाई ए स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिख दो, डायरेक्टली हो गई बात, isn't it? So that will be equal to how much for me 2 into delta r by r कितना दे रखा है in the problem 3. So 2 into 3 that will become for me 6%. Clear है? चलो और एक क्वेश्चन देख लीजिए. The coefficient of volume expansion, the coefficient of your volume expansion of glycerin is 49 into 10 to the power of minus 5 into Kelvin inverse. The fractional change in the density, the fractional change in density on a 30 degree centigrade rise in temperature is how much? चलिए बताइए. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा? ρ2 is equals to ρ1 into 1 minus gamma into your delta theta. यानी ρ2 will be equal to ρ1 minus ρ1 into gamma into delta theta. So I can write here ρ2 minus ρ1 will be equal to your, ये कितना लिख सकता हूँ बेटा मैं? Isn't it? Divided by your ρ1 will be equal to gamma into your delta theta. यानी डेल्टा रो में लिख सकता हूँ ना बेटा मैं, डेल्टा रो डिवाइडेड बाई योर ρ1 विल बी इक्वल टू गामा की वैल्यू 49 into 10 to the power of minus 5. टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन फॉर मी हाउ मच 30. सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर.
डन बेटा। कन्वर्शन तो आते होंगे ना सभी को, करा दो एक दो मॉडल्स। ठीक है, फिर भी ये कर लीजिए, बताइए। मान के चलो ए डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, a difference of temperature of 25 degrees centigrade is equivalent to difference of dash. First option is given as 45 degree Fahrenheit. Second option is given as 72 degree Fahrenheit. Third option is 32 degree Fahrenheit. And fourth option is 25 degree Fahrenheit. कोई बता सकता है? फॉर्मूला याद है अपने को, C is equals to 5/9 into F minus of 32, isn't it? So C1 will be equal to how much? 5/9 into your F1 minus of your 32. Same way C2 is equals to your 5/9 into your F2 minus of your 32. And difference पूछ रहा है तो C1 by C2 is equals to 5/9 into your, ये हो गया F1 minus of 32 minus of F2 minus of 32, isn't it? ब्रैकेट ओपन किया तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये वाला चले गया, तो C1 माइनस ऑफ C2 कितना आ जाएगा बेटा? C1 माइनस C2 कितना देगा? डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये दे रखा है मेरे पास 25, दैट इज इक्वल्स टू 5/9 into F1 minus of your F2. तो ये जाएगा 5 1 जा 5 5 जा 5 9 जा 45, यानी डेल्टा F will be equal to 45 degree Fahrenheit. डन बेटा। एक क्वेश्चन करके बताइए बेटा। ऑक्सीजन बॉयल्स एट चलो बताइए। Oxygen boils at minus 183 degrees centigrade. This temperature is approximately in Fahrenheit. Celsius scale minus for freezing point divided by boiling point minus of your freezing point is equals to constant, यानी Fahrenheit में minus 32 divided by 212 minus of 30, यानी जिसके लिए कितना है 183 minus 0 freezing point divided by 100 minus 0, that is F minus 32 divided by, ये हो जाएगा 180. So this one is minus of 180 divided by your 100 is equals to your F minus 32 divided by your 180. ये वाला चले गया, isn't it? So एक चले जाएगा 5 to 5 जा to 9 जा, so it is minus of 183 divided by 5 is equals to F minus 32 divided by 9. F की वैल्यू निकाल लेंगे, simplify it, will get the value. कर लोगे?
ठीक है बेटा, अभी पढ़ लो आप लोग, ओके बाय।